got into Okay. TCS from there, from campus placements, and then worked there for 2 years. After that, I moved over to Amazon in 2021. How you thought, like how you applied for Amazon and how you switched to Amazon? Like what an SDE does. So an SDE, as the expanded form says, software development engineer. It means you need to cover everything what a software development cycle entails. Round of aptitude, that round, written round, and then we got the interview calls. आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, फिर आपका उसके बाद टेक द रिक्वायरमेंट, फिर उसको डॉक्यूमेंट करना, रीच आउट टू स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स। सो काफी लोगों का रहता है कि उनके ना कहते हैं ना एक लग्जरियस लाइफ मिलती है गूगल पे, तो क्या वो ऐसी लाइफ यहाँ पे अमेजोन पे भी है? जैसे कि अगर गेम्स का बात कर लें या फिर जिम हो या फिर फूडिंग का वो पूरा अरेंजमेंट, वैसा भी यहाँ पे भी रहता है अमेजोन पर भी? आपकी भी ड्रीम कंपनीज हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन, बट ड्रीम कंपनीज सिर्फ ड्रीम बन के रह गई हैं. So to make this dream as reality, today we have a very special mentor with us, Saptarshi De, who is the software development engineer at Amazon. So I welcome you to the session. Okay, so sir, can you tell us more about yourself? Yeah, so I did my bachelor's from University of Engineering and Management, Calcutta. It's a private university over in Calcutta. Passed in 2019. Got into Okay. TCS from there, from campus placements, and then worked there for 2 years. After that, I moved over to Amazon in 2021. Currently, I'm working over there for past 2.5 years over there. Got into Amazon as an SD1, got promoted to SD2. So I'm working over there as an SD2. Primarily, I'm working as part of the AWS infra supply chain team. So yeah. तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? लाइक अमेजोन पे कैसा एटमॉस्फेयर है, एंड बेसिकली जो वर्क क्या रहता है एज अ एसडीई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर? That's a great question. So Amazon Pay primarily, so I'll talk about what we work over there and then I'll get to the good part. So how is the culture? Sure. So yeah. So वहाँ पे काम is like what an SDE does. So an SDE, as the expanded form says, software development engineer. It means you need to cover everything what a software development cycle entails. आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, फिर आपका उसके बाद टेक द रिक्वायरमेंट, फिर उसको डॉक्यूमेंट करना, रीच आउट टू स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, अंडरस्टैंड के एग्जैक्टली करना क्या, कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या, कि आप मान लीजिए जैसे सिंपल प्रोडक्ट अमेजोन पे, तो वहां पे दी प्रोडक्ट मैनेजर्स और दी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स दे टुगेदर रीच आउट टू कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड की वहां पे एग्जैक्टली उनका मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, व्हाट आर दी प्रॉब्लम आर दे फेसिंग। सो उससे रिक्वायरमेंट लेके अंडरस्टैंड करके ब्रेनस्टॉर्म करके डॉक्यूमेंट बनाना है, व्हाट वी कॉल एज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। आई एम श्योर वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस सॉफ्टवेयर एसडीएल लाइफ साइकिल। तो उसमें डॉक्यूमेंट बनाना, उसके बाद डॉक्यूमेंट लेके रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करना, फिर समझना कितना टेक्निकली फीजिबल है, व्हाट कैन बी टेक्निकली इम्प्लीमेंटेड, व्हाट कांट बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेशन, राइटिंग टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद मेंटेनेंस, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट फेज एज वी नो। सो पूरा SDLC cycle है, everything, each part of it entails under a job description of software development engineer. Okay. And as you keep on growing, one SD1 हो गए, the levels and designations might be different across company, but Okay. ultimately it's 1, 2, 3 as we grow. तो आपका scale and scope of this keeps on increasing. Okay. That's what basically uh, an SD role entails. ओके, मतलब And काफी about लोगों का वैसे ये डाउट रहता है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो मतलब आप आके आप कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट मतलब बनाते हैं सॉफ्टवेयर? या तो आपका इट कैन बी बोथ। सो प्राइमरीली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फैंग कंपनी जहाँ पे सॉफ्टवेयर अपने प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे टॉकिंग अबाउट अमेजन का अमेजन पे हो, गूगल पे हो गया, या फिर मैप्स हो गए, इन लोग इन हाउस बना रहे हैं, फिर उसके बाद रीच आउट एंड से कि दिस इज माय प्रोडक्ट, यू कैन यूज इट। एंड इसके बाद आपका जो एनहांसमेंट होता है ना, इवन दिस रिक्वायरमेंट, मतलब जो प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनते, दे रीच आउट टू पीपल, दे हैव कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, कस्टमर एक्सपीरियंस सर्वे, फिर उसके बाद क्या कहाँ पे कमी है, कितना इंप्रूव कर सकते, कस्टमर क्या चाहते हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस। तो कुछ बन गया, प्रेजेंट किए, फिर उसको कस्टमर से फीडबैक लेके इट कीप्स ऑन इंप्रूविंग। सो इंटरनल भी हो गया, एक्सटर्नल भी हो गया। ओके, मतलब बहुत से वर्क्स रहते हैं इसमें। या सो और वहाँ का दैट्स एटमॉस्फेयर पूरा कैसा है? इट्स नाइस, इट्स नाइस। सो मतलब हाँ, तो बेसिकली जैसे जैसे मोस्ट ऑफ दी फैंग कंपनीज हम लोग सुनते हैं कि I'll talk about the bad. What we hear bad is कि बहुत प्रेशर है। I'm sure you all have heard about it. तो वो तो रहेगा ही, वो काम में रहेगा। प्रेशर तो रहेगा ही। But the good part is you have a good team, you have a good manager,
luckily I've been into a team where the people are good, where the manager is good. They hear you, and whenever there's something that needs to be solved as a team, we get together as a team कि हाँ इसका काम है, हम नहीं करेंगे, वैसा नहीं होता। जिसका काम है, अगर उसके पास उतना बैंडविड्थ है ना, सब मिलके करेंगे, तो दैट तो कल्चर टीम ऑफ, का वर्क हो गया। हाँ, टीम, it's more of how a team is built is what defines the entire culture of the entire place. तो राइट। वो वाला बहुत अच्छा है, and उसके साथ पर्क सबको पता ही होता है, ग्रेट ऑफिसेज, फिर ऑफिस ट्रिप्स हो गया, फिर आपका फूड कूपन एंड ऑल एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट, तो अच्छा, कीप्स ऑन। जैसे सो काफ़ी लोगों का रहता है कि उनके ना कहते हैं ना एक लग्जरियस लाइफ मिलती है गूगल पे, तो क्या वो ऐसी लाइफ यहाँ पे अमेजोन पे भी है? जैसे कि अगर गेम्स का बात कर लें, या फिर जिम हो, या फिर फूडिंग का वो पूरा अरेंजमेंट, वैसा भी यहाँ पे भी रहता है अमेजोन पर भी? हाँ, तो यहाँ पे कंपनी टू कंपनी पर्क्स थोड़ा इधर उधर होता है। जैसे गूगल में जिम्स एंड ऑल आर देयर इन सर्टेन ऑफिसेज इन अमेज़न। सारे ऑफिस में ना हो सिमिलरली, बट सर्टेन प्लेसेस यहाँ पे हर एक फ्लोर पे कॉफी बैरिस्टा हो गया आपका। हाँ, फ्री फूड जितना वहां पे आता है उतना शायद हर एक ऑफिस में यहाँ पे ना हो, बट गेम सेंटर हो गया आपका, ओह, कॉफी बैरिस्टा हो गया आपका, तो ये सब मोटा मोटा अच्छा चीज है। तो दैट पीस इज देयर। देन लास्ट ईयर वी वेंट टू गोवा ऑन ऑफिस ट्रिप, वेंट टू हैदराबाद। So these are ओके। all, we went to Hyderabad for hackathon. So these are all perks that comes along with it. तो वो You पूरा might आपको not see this एंजॉयमेंट। during your salary package, like during your compensation discussion, but this will definitely be something that will be getting once you That will be a good got more. memory. And also being at Amazon is also not easy, like not seriously easy. हम लोग कहते हैं कि जैसे ड्रीम कंपनी, मुझे लगता है कि Amazon में क्या ऐसा है कि easy है, it's like आप कितना दोगे रेटिंग में कि I wouldn't go ahead and rate it. Rating is something that we shouldn't do, but easy word, see, I would say कि हाँ मेहनत करोगे तो हो जाए। हम्म इतना I can see. Easy difficult rating वाला I think is we should not talk in that terms, but definitely if you work hard it's achievable. That's it. हम्म तो इतने जन कर रहे तो definitely someone is working hard, we can easily go into it. बिल्कुल राइट। सो आपको कॉलेज के बाद अपना फर्स्ट जॉब ऑफर कैसे मिला? मतलब वो फर्स्ट जॉब ऑफर जो था वो कहाँ पे था? वो आपका टीसीएस में था। तो आई टेल यू द पीस। तो व्हाट हैपेंड, आई गॉट आई वी हैड डिफरेंट कंपनीज कमिंग टू आवर campuses, and we ओके। we had to go and apply for similar to TCS. TCS had this NQT, I don't, National Qualified Test or whatever it was called. So we had that. We had to go to a TCS center, give our exam over there. We had the first round of aptitude, that round, written round, and then we got the interview call. ओके, मतलब आपका Back फर्स्ट राउंड then जो they था एप्टीट्यूड राउंड में था? हाँ, तो back then there was this entire aptitude round had 4 to 5 sections: logical ओके। reasoning, programming हाँ। questions, and then yeah, all of that. I can't recall all the round sections individually, but the mota it was aptitude questions, programming, basic programming questions, one programming question, entire solution, and all of that. तो उसके बाद there was this TCS digital का एक भी हायर उसके साथ parallelly चल रहा था। So what happened? I was lucky enough to get a shortlist for the digital written round. I went, I went for that digital written round, cleared that as well. And then then the interview round was like this: either you get a digital hire, either you get a ninja hire, and or else you don't get an offer at all. So in that interview, I could not clear for the digital, but I got selected for the ninja hire. So that's how the process was in TCS. तो आपने टीसीएस में कितना मतलब इयर्स वर्क करा? वहां पे मैंने 2 साल काम किया, तो 2 years. 19 And to then 21. how you thought, like how you applied for Amazon and how you switched to Hmm. Amazon? Oh, that's a great question. It's a very frequently asked question on LinkedIn as well. I've been getting many messages. So I'll use your platform to once again talk about it in very detail. So when I was preparing for that, end of, if I remember, it was the COVID times back then. So I had got some time where I did not have to commute to my office. तो मेरे पास कुछ वक्त था जहाँ पे मैं बैठ के प्रिपेयर करूँ। ओके। तो उसके लिए मैं सुबह, मतलब आफ्टर माय वर्क टाइमिंग, आई स्पेंड सम टाइम ऑन द कोडिंग क्वेश्चंस, ऑन द डीएसए क्वेश्चंस, फिर बिहेवियरल का हो गया थोड़ा थोड़ा, सिस्टम डिजाइन, तो वो प्रिपेयर कर रहे थे। And on the application part, I have been reaching out to people, and I'm sure you have seen on LinkedIn where people recommend you कि बस email डाल दो, मैसेज डाल दो, जिसको भी हो कि रेफर कर दो या बता दो what we need to get into that. I did the exact same thing.
It has started cold emailing people, cold DMing people, and one of them responded, and I got a referral and I applied with that. अच्छा मतलब So आपको referrals work. ये अच्छा रेफरेंस इंपॉर्टेंट है आई मैंने बस सुना था मुझे रियलिटी में नहीं लगा कि ये वर्कआउट भी करता है Referrals work. So, and I think something that people say, like there are many things which people say कि ये कर लो वो कर लो ये कर लो, हम्म but if once you start seeing people की चीजें काम कर रहा है ना, that helps you कि हाँ अरे ये काम कर ये करके देखते हैं, तो वो राइट एक पॉजिटिव वो वाला होता है कि चलो मैं भी करके देखता हूँ। तो हाँ, समथिंग दैट आई कैन अश्योर फ्रॉम माय स्पेसेस की रेफरल्स काम करते हैं, कोल्ड डीमिंग भी काम करता है। तो लेकिन कोल्ड एज इन आई रेफरेंस के थिंक लिए व्हाट जस्ट या आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग, cold DMing से भी better I would say कि try to build a personal contact with people whom you're reaching out to LinkedIn, not personal thing from a professional perspective कि ask genuine questions। एक तो हो गया रेफरल, उसके अलावा भी हमारा बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना कि प्रिपरेशन कैसे करना है, तो ask people about that, try to build a personal connect with that person and then gradually you can ask a referral, uh, can you refer me if you find my uh, find me suitable for that, तो वो तो उससे मतलब तुम्हारा ये चीज मुझे इट थोड़ा इम्प्रूव्स। समझ नहीं है कि रेफरल अगर करना है तो हम किससे अगर मान लीजिए आज के डेट में अगर मैं हूँ हम्म और मेरे अंदर कुछ लाइक सम टेक्निकल स्किल्स है एंड आई वांट हम्म टू आस्क फॉर एनी हम्म रेफरल तो मैं पहले फर्स्टली मैं किन को सर्च करूंगी सेकंड हम्म कि अगर मैं सर्च भी कर रही हूँ तो मैं उनसे बात कैसे स्टार्टिंग कैसे करूंगी एंड हम्म थर्ड वो मुझे मतलब क्यों लाइक अगर हमें अमेजोन में चाहिए तो मैं अमेजोन वाले से ही मतलब उनको रिसर्च मतलब सर्च करना होगा उनको ही मैसेज डालना होगा या ओके एनी अदर पर्सन ऑल्सो वी कैन आस्क फॉर Again, a great question. So I think there are two parts to that. One, you reach out to like filter a list of companies where you want to apply for. ओके वो एक मेंटल फिल्टर बना लो तो यहाँ पे अप्लाई करना, एंड स्पेसिफिकली रीच आउट टू दोस पीपल, डोंट रीच आउट टू एनी अदर पीपल ऑफ एनी अदर कंपनी। जैसे मान लो आपको गूगल में अप्लाई करनी है, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है, आप इन तीनों के हायरिंग यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे रिक्रूटर्स सोर्सर्स हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, रीच आउट टू देम, कोल्ड ईमेल डाल दो, कोल्ड डीएम डाल दो कि ऐसा आई वांट टू अप्लाई, आई हैव दिस रेज्यूमे, और एंड विद जॉब डिस्क्रिप्शन। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू नीड टू अप्लाई, लाइक हूएवर गिव्स यू रेफरल नीड्स टू हैव द जॉब डिस्क्रिप्शन किस पे अप्लाई करना है, तो बता दो हमको अप्लाई करना है, मेरे पास ये स्किल्स है, ये मेरा रिज्यूमे है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन, इस पे अप्लाई करवा दिए लोकेशन के लिए। आगे he can respond or he may not or he will not respond. The percentage of people responding might be less than 1%, but keep DMing and cold emailing people. The second part is if you're able to build a connect with that person. So I would say in today's world, maintaining a presence on LinkedIn is very important. Not very important, is a must need for at least राइट the students and not students, even professionals. It's a must need for this entire generation, is what I believe, at least for us. राइट So all of us. So I think start maintaining a presence on LinkedIn, and as you maintain it, you will see people reaching out to you, people commenting, and you also start commenting to relevant people. Try to build that connect, and once you have that connect available, you will reach out to them. You can reach out and say, "Ki, you can then it will be a much safer position, a much better position where you can ask and say, ki, like I need a referral, so would you mind referring me for this position at this company?" So I think there are two paths, and it's you can take either of the paths. So yeah, that's more or less about how you can go about it. And for So, more details, you can also follow me on LinkedIn. yeah, sure, we Yeah, will. it's a message to your audience. Yeah, sure. Everyone will be liking, like to follow you. Oh, thank you. Now, मेरा like भी you will promo हो be, गया. no, you will be disturbed. Okay, you are getting so much of LinkedIn Ah, connections requests. no, I would love that. ओके बट अच्छा जो आपको रेफरल मिला उसके बाद आपका जो कोडिंग वगैरह पे कभी कुछ हुआ था टेस्ट वगैरह हाँ, तो उसके बाद आई हैड 5 राउंड ऑफ इंटरव्यूज। तो पहला राउंड था, तो अगेन देर आर 3 पार्ट्स, प्राइमरली 3 पार्ट्स इंटरव्यू प्रोसेस। एक आपका बन जाता है फोन स्क्रीनिंग, एक ऑनलाइन फोन स्क्रीनिंग ऑनलाइन असेसमेंट इधर और होते हैं प्राइमरी, बहुत ही रेयर तो केस में। पहला क्या बोला आपने फोन स्क्रीनिंग, ओके टेक्निकल ये फोन स्क्रीनिंग, ओके ओके आई टॉक अबाउट इट। या ऑनलाइन असेसमेंट, इसका ये प्राइमरीली इधर ऑनलाइन हो गया, फोन स्क्रीन हो गया, इधर और होते हैं। ओके तो बहुत रेयर केस में एंड होते, बट मोस्टली था इधर और। देन यू हैव योर फोर्थ सेट ऑफ ऑन साइट इंटरव्यूज which has a combination of more than four combination of coding, this system design in for SD2 roles,
ओके। and your behavioral rounds or the hiring manager round. ओके। So from an Amazon perspective, this is primarily this structure is maintained across companies. एक आध जगह पे राउंड एक तो इंक्रीज ज्यादा हो सकते हैं, बट दिस इज द स्ट्रक्चर प्राइमरली. स्पीकिंग आउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम Amazon, तो first round the phone screening was the elimination round. So if you're able to clear that, you will get an opportunity to interview for the rest of rounds. तो So फर्स्ट राउंड वो मेन सबसे रहेगा, पर मेन राउंड है। each round is important, but that is the round that will हाँ at least help मतलब you get हाँ, into एक that, तरह आपको हो get गया कि into अंदर that. आ हाँ गए। हाँ हाँ, उसमें नहीं हुआ तो वहीं से निकाल देंगे. हाँ, वहाँ तो ऐसे ही पहला है। राउंड वाज एलिमिनेशन राउंड क्या. तो उसके बाद आपका आ गया चारों. उस वंस यू क्लियर दैट, यू द नेक्स्ट सेट ऑफ इंटरव्यूज विल बी एज अ होल, कि आपका अगर एक, मतलब एटलीस्ट फॉर मी इट वाज एन एंटायर सेट ऑफ इंटरव्यूज, तो अगर एक में भी खराब हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, चारों आप दो. क्यूमुलेटिव रिजल्ट इज व्हाट विल एंश्योर इफ यू गेट इनटू द कंपनी और नॉट. तो उसके ओके। बाद चार राउंड हुआ, उसमें कोडिंग राउंड तीन थे, एक में हायरिंग मैनेजर राउंड था, और एक यहाँ पे बार रेजर का भी कंसेप्ट, बार रेजर राउंड होता है. तो और every round there were a set of leadership principle questions asked. So what is the LP? It's basically a set of Amazon principles that is set for internal employees as well as external people who are interviewing. They want to see if you're actually in tandem with what the culture in a company is in a company. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो, उनको आपको ऐसे पूछेगा कि how would you take a negative feedback, तो आप जो आंसर दोगे they will analyze and see if that matches with what they सी एम्प्लॉयज इन देयर कंपनी. तो वो मोटा मोटा उसका वो होता है. राइट। तो दैट्स व्हाट दिस द इंटरव्यू प्रोसेस वाज. काफी अमेजिंग जर्नी रही, आपसे काफी कुछ सीखा। तो आपके एनी एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए? हाँ, तो advice I would try to summarize what I've said over the past few minutes. So primarily I think keep applying, keep asking for people. That is the most important thing. कि जब तक आप नहीं पूछोगे ना, आपको ना रेफरल मिलेगा ना जॉब मिलेगा. राइट। तो सबसे आस्क पीपल, रीच आउट टू पीपल, डोंट फील कि क्या क्या कोई कुछ नहीं सोचते. सब एक पॉइंट पे सबसे पूछे, इसीलिए जॉब आउट देयर. तो आस्क पीपल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. स्टडी हार्ड, विच यूर ऑलरेडी सब कर ही रहे, और इंजीनियरिंग का स्टडी सबको पता ही है. तो राइट। like it's people are working hard, have fun. That's the most important thing. हम्म। Studying hard, having fun. Yeah, that's more or less I think in a nutshell. I wouldn't try to exaggerate anything. सिंपल ही है पूरी चीज. तो बस टाइम पे प्रिपरेशन करते रहो, अप्लाई करते रहो, बस बाकी रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो. और मस्ती मजाक तो रहती है. सही कहा। सबसे बढ़िया होता है कि हमें एक अपने मेहनत तो करनी है, लेकिन साथ में ये है कि थोड़े लोग सोचते नहीं यार अभी मेहनत कर लेते बाद में, हाँ वो बिल्कुल सही है, अभी मेहनत करो बाद में एंजॉय होगा, लेकिन हाँ कि डिप्रेशन में मत जाओ। काफी लोग वो हाँ मेहनती से मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। करेक्ट करेक्ट. और वो भी एक होता है कि आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी शुड एंजॉय द प्रोसेस. If राइट। you're not enjoying what we are doing, then there's no point working hard for to get into a company. Because if you're not enjoying coding, don't get into a fine company. The point is कि अगर हम प्रिपेयर करके बहुत सही करके हम निकाल भी लिए, उसके बाद हमको अगले अगले पूरा लाइफ, एटलीस्ट नॉट द एंटायर लाइफ, द नेक्स्ट 5 to 10 years तो करेंगे ही ना. तो दैट वही वी कर। वोंट एंजॉय द वर्क ओवर देयर. तो बिल्कुल। enjoy what you're doing, and I think sub, yeah, I mean the at least for the CSE people I can vouch that coding enjoy किए, इसीलिए हम लोग CSE लिए है. तो राइट। work, just keep doing what you have been doing, बट nothing, कुछ आज एक्स्ट्रा की नहीं डेट करना है. में काफी लोगों ने हाँ सीएससी तभी लिया क्योंकि वो टॉप ब्रांच है। सबको हाँ पता है कि सीएससी के पीछे ही भाग रहे मोस्टली लोग। हाँ, मतलब इन अ वे इंडिया में, एंड ऑनेस्टली फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव व्हाट आई कैन से कि पहले से द प्रोसेस हैज like loosened much, like हम्म। even before in the early days if you think कि the process was even more harder, तो process थोड़ा loosen up हुआ है. तो काफी all हुआ this, है। and I just want to say one last thing कि जो hustle culture जो बहुत पॉपुलर है ना, डोंट गेट इनटू दैट. अलग से हासिल नहीं करना है किसी को, बस जो जो लाइक रेगुलर प्रिपरेशन, रेगुलर स्टडी इज सिंपल थिंग. गेटिंग राइट। इनटू अ फैंग जितना ओवर एग्जैजरेट किया जा रहा है उतना है नहीं. राइट। रोज का रोज थोड़ा कोडिंग कर लेंगे, थोड़ा प्रिपरेशन कर लेंगे, बन जाएगा. तो बट वो उन लोगों के लिए दिक्कत आती है कि जो लास्ट टाइम लाइक बिल्कुल लास्ट टाइम के लिए करते हैं सब। अगर आप डेली हाँ कंसिस्टेंट रहोगे तो करेक्ट इट विल बी वेरी इजी करेक्ट फॉर देम। करेक्ट, यही पॉइंट है कि रेगुलर करते रहो, वो बन जाएगा. मतलब हासिल राइट। कल्चर इतना करना है, वो इतना घंटा करना है, इतना करना है, वो सब कुछ नहीं करना है. सिंपल प्रिपरेशन. एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिसोर्सेज ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है. बहुत There अवेलेबल are है। people who are willing to help, there are resources available, so everything is there. Just
एंड ऑर्गेनाइज रिसोर्स अवेलेबल है, तो बस पढ़ो एंड यू कैन इजीली गेट इनटू वन. सो बहुत ही अच्छा सेशन था, डेट वॉज रियली नॉलेजेबल, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली. इवन हम जो इतना लिंक्डइन पे अपडेट नहीं रहते, इवन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी अपडेटेड, लाइक अपडेट रहूँगी लिंक्डइन पे. सो वंस अगेन थैंक यू सर, सेशन काफ़ी नॉलेजेबल था. Sure, thank you. Thanks once again for inviting me and organizing, arranging all of this. Thank you. It was a great time for me interacting with you as well. Thanks. And if you found it any value out of it, do like, share and subscribe and be connected for more amazing sessions like this. And comment करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, because your feedback, आप सबका feedback मेरे लिए बहुत important है. Stay tuned for the next session. Bye.